Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about SPADEx mission. I hope you are aware. So if you are reading newspaper, I'm sure you must have read this news that ISRO has successfully conducted space docking, right? And it's actually a very great achievement. And we will discuss why it is an important achievement and how it will be important for the upcoming missions. ठीक है? तो स्पेडेक्स के बारे में आपने सुना होगा कि स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली हो गया है. तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेस डॉकिंग वी विल डिस्कस and we will discuss things around it, the name of the scientist, the project director, etc. and all. Then we will discuss कि how this would be helpful in the future upcoming missions. ठीक है, कि कैसे स्पेडेक्स जो कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है वो कैसे आगे आने वाली मिशंस के लिए हेल्पफुल होगा इसरो के लिए. ठीक है, then we will discuss questions, the questions which are actually helpful, the type of questions which are asked in the exams. So we will discuss that also कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं. तो वैसे मैं questions भी करवाऊंगा. ठीक है, so is it clear? Am I audible, visible? Everything is fine? अगर मेरी आवाज आ रही है, if everything is fine, if the slide is visible, so please write yes in the comments so that we can start our session. So let me check myself. Okay. So let us begin with the first question of the day. So the first question is, who is the new Secretary of Department of Space? Your options are Mr. K. Sivan, Srimati Nigar Shahji, Mr. S. Somanath, Dr. V. Narayanan. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है? New Secretary, Department of Space. Now you'll be thinking, sir, which post you are talking about? This is actually nothing but ISRO chairman. Okay. So ISRO chairman is, I have discussed so many times, but still I'm repeating. ISRO chairman or chairperson is also known as Secretary, Department of Space, which is directly under Prime Minister's office. So this department is not under any ministry. Generally what happens is the department are generally under some ministry, but this department of Space, is actually directly under Prime Minister's office. Okay. So this is what you should be knowing it. So who is the new ISRO chairman? So some person has written C. No, but he is actually an outgoing. He has just left this post. So C is not the right answer. Please tell me what is the right answer to this question. I'm still waiting, believing that yes, you should know. New ISRO chairman पूछा जा रहा है नहीं. The right answer is option D. Dr. V. Narayanan is the right answer to this question. ये आपको पता होना चाहिए. And this is the 13th January news. Dr. V. Narayanan assumed charge of Secretary, Department of Space and Chairman, Space Commission. Okay. So both are actually the posts given to ISRO chairman. Okay. Yes, Om Bhaskar and Srinita Banerjee, both are right. D is the right answer to this question. Very good. हाँ. तो ये outgoing chairperson है. His name is Mr. S. Somanath. Outgoing ISRO chairperson, and the new one is Mr. Dr. V. Narayanan. He is the new ISRO chairman or new Secretary, Department of Space, or you can say Chairman, Space Commission. So these are the terms being used. Okay, तो आप देख सकते हो. So on the right one is the outgoing chairperson and outgoing ISRO chairman, Mr. S. Somanath, and on the left is the new one, Dr. V. Narayanan. Okay. Okay, so this you should be knowing. अच्छा, एक दो सवाल और पूछ रहा हूं because we have discussed it. Who is option B? Can anyone tell me? Because this is also part of current affairs, GK and all, and that is why I'm asking. Who is option B? Nigar Shahji. She is actually project director of ISRO's Aditya 11 mission. आपने नाम सुना Aditya 11 mission. This mission is for to research about the sun. So the project director of Aditya 11 mission. This is also in ISRO's mission, and last year it was in the news. So this lady is Nigar Shahji, and she is from the state of Kerala. You can give as an example of like whenever there's a question on women empowerment, women, so you can use these examples. Okay, let's move on. So let us discuss something about Dr. V. Narayan sir. So actually, he's a rocket and spacecraft propulsion expert, joined ISRO in 1994. Okay.
and he became the director of Liquid Propulsion System Center in January 2018. अच्छा, अगर आप देखोगे इनका जो मेन रिसर्च है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर है. When India was denied cryogenic technology, means we tried to import from foreign countries, but we did not get. So he actually he was instrumental in making cryogenic engine, made in India engine. Now you'll be thinking, sir, ये cryogenic engine क्या होता है? So whenever the word cryo comes, cryo मतलब होता है extreme cold. Cryo preservation आपने नाम सुना. Cryo means extreme cold area temperature. ठीक है. So actually होता क्या है कि generally oxygen and hydrogen are gaseous state, in gaseous state. But if they are cooled to, let's say oxygen is cooled to minus 183 degrees Celsius and hydrogen at minus 253 degrees Celsius, they actually convert to liquid. Okay. So what we call it as liquid hydrogen and liquid oxygen. So these liquid oxygen and liquid hydrogen are used in propellant for actually as propellant in engines, in aircraft engines or spacecraft engines. ठीक है, जैसे ये रॉकेट है ना, ये रॉकेट, तो इसका जो इंजन होता है, so this is GSLV Mark 3. Okay. Now nowadays it is called as LVM3, Launch Vehicle Mark 3. Okay. So this has engine, cryogenic engine. इसका जो थर्ड स्टेज इंजन होता है वो cryogenic इंजन होता है. One stage is actually of cryogenic engine. ठीक है, that is what you should be knowing. Okay. तो ये जो cryogenic engine है, this is considered as the most powerful engine currently we have. तो इनके जो बनाने वाले में इनका रोल था, वही जो नए इसरो के चेयरमैन है, इनका he has a great role in the development of this project of cryogenic upper stage engine. ठीक है, तो cryogenic engines में liquid hydrogen, liquid oxygen यूज किया जाता है, and these are used in जैसे GSLV Mark 3 satellite हुआ, then we'll be sending Gaganyaan mission. ठीक है, so that will also use the same GSLV Mark 3. ये जो है ना, ये वाला launch rocket GSLV Mark 3 और LVM3. So this is used in Chandrayaan 3. तो चंद्रयान 3 को भी इसी से लॉन्च किया गया था. Then we'll see Gaganyaan mission in future. That will also be launched by this same GSLV Mark 3, which will have cryogenic engine and all. ठीक है, तो एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया about this and all. Okay, so आप पढ़ सकते हो GSLV Mark 3 LVM3 के बारे में. It's a 3-stage engine है ना, solid, liquid and cryogenic engine. So the third stage is the cryogenic engine. So that is what you should be knowing it. है ना. तो जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 and Gaganyaan mission, it is a future mission. These all were launched by through this GSLV Mark 3 or LVM3, a launch vehicle Mark 3 satellite rocket और launch vehicle कह सकते हो. ठीक है, इसको launch vehicle कहते हैं या rocket कहते हैं इसको. Okay, let's move on to the next one. Vikram Sarabhai professorship was recently conferred to whom? Mr. S. Somanath, Srimati Nigar Shahji, Dr. V. Narayanan, G. Satish Reddy. What is the right answer? Who was Vikram Sarabhai? He is considered as father of India's space program. ये सब पूछते हैं एग्जाम में. Who is considered as father of India's space program? So that is what you should know. Vikram Sarabhai professorship was recently given. This was actually in newspaper, the Hindu newspaper. If you read, you must have seen this in the news. So this was recently conferred to the outgoing ISRO chairperson S. Somanath. So अभी just उनका टर्म पूरा हुआ था S. Somanath सर का, और उनको अभी विक्रम साराभाई प्रोफेसरशिप अवार्ड दिया गया. मतलब एक तरह से है ना, 17 जनवरी को. Amid speculation, ISRO confers Vikram Sarabhai professorship on Somanath and S. Somanath, है ना, with immediate effect for 2 years. So this you should be knowing. Okay. Earlier K. Sivan को भी दिया गया था, है ना. Now. Okay. Yes. Let's move on to the next one. India has become the dash nation to have successfully done space docking. ये सब पूछते हैं. These are the questions which are asked in the exam. Second, first, fourth, fifth. So India कौन सा नंबर का कंट्री बना है स्पेस डॉकिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में? Anyone? Please tell me, guys. I'm waiting for the response. Even if you do not know, you can have a guess. The right answer is option C, fourth. India has become the fourth nation to have successfully conducting
to have successfully conducted space docking. So C is the right answer to this question, है ना? India successfully conducts SPADEx docking experiment. India joins elite club of nations. Elite club मतलब बहुत few लोगों ने किया है ना. So very few countries have done this successfully, and India has become the 4th country to do so, है ना? To develop and demonstrate needed technology and all. Okay. The next is, who is the project director of SPADEx mission? Project director का नाम बताना है. Mr. K. Subbarao, Mr. M. Sankaran, Mr. N. Surendran, Mr. Anil Kumar. What is the right answer to this question? The SPADEx mission is a space docking mission. I will explain what is space docking mission. Just wait for the class to complete the class. I will explain कि space docking होता क्या exactly. तो जो SPADEx mission है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? Anyone? If you know it, please answer. The right answer is Mr. N. Surendran. So C is the right answer to this question. So ISRO है ना, देखो ये दो है ना, ISRO docks 2 fast-moving satellites in space. India 4th in the elite club. So SPADEx mission director जो है K. Subbarao है ना, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो N. Surendran है. So project director I asked, so the answer is N. Surendran, and mission director जो है वो है K. Subbarao. So this you should know. मिशन डायरेक्टर का पूछा जाएगा तो K. Subbarao लिखोगे, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो मिस्टर N. Surendran. तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. तो अगर आप देखोगे गौर से तो इसमें और भी लोगों की बात कही गई. देयर आर डिफरेंट अदर पीपल आल्सो, लाइक ISRO रिसर्च सेंटर, सैटेलाइट रिसर्च सेंटर है, उनके डायरेक्टर का भी नाम है M. Sankaran. देन वी हैव SPADEx मिशन डायरेक्टर इज K. Subbarao एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द सेम इज N. Surendran. और एक स्ट्राक की बात की गई, स्ट्राक के डायरेक्टर है अनिल कुमार. व्हाट इज स्ट्राक? ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क सिस्टम इन बैंगलोर. इसके जो हेड है वो है अनिल कुमार. नाउ यू विल बी थिंकिंग सर इतना सारा चीज क्या है, ISRO रिसर्च सेंटर क्या है, स्ट्राक क्या है? तो देखो एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको कई बार बताया है, डिस्कस्ड इट इन द पास्ट, दैट ISRO के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं. जैसे रिसर्च फैसिलिटीज देखोगे, एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम तिरुवनंतपुरम एंड बैंगलोर में, ठीक है. देन वी हैव एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लॉन्च फैसिलिटीज के लिए ISRO सैटेलाइट सेंटर है बैंगलोर में, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ. तो इसी के जो हेड है ISRO रिसर्च सेंटर के, हिज नेम इज M. Sankaran. ठीक है, तो मतलब सब कोई मिलके करते हैं. दिस इज नॉट वन पर्सन, लाइक आई मीन दिस इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ मेनी पीपल. ट्रैकिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटीज में आप जाओगे तो देखो ISRO इस ट्रैक है ना, ये ना इस ट्रैक इसी को कहते हैं, ISRO टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क. ओके, तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में इसका काम होता है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू कैन से. इस ट्रैक के भी डायरेक्टर इसमें है ना, अनिल कुमार is also involved. So there many people are involved actually. It's not a one man's project. I mean, it's done by the effort of many people as a team member and all. Okay, so that is what I wanted to highlight. Okay, let's move on. अच्छा, एक चीज और पता होना चाहिए. We have just discussed that a project director of Aditya L1 mission, which was in the news last year, है ना, we have just discussed is Srimati Nigar Shah ji. Okay. Similarly, we have Mr. P. Veera Muthuvel, who is the project director of Chandrayaan 3, because Chandrayaan 3 was also very much in the news last year, है ना, ये काफी न्यूज में था उस टाइम पर. So that is what also you should be knowing about. Now, the next one is, I have told you that India has become the 4th country to have done space docking. So now, which are the 3 previous nations which have done it? This type of question we have seen in the previous year questions. Okay, so if you see the PYQs of CLAT, ALET or another exams, you will see कि इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, क्या अच्छा 4 इंडिया चौथा कंट्री बना तो पहले कौन 3 कंट्री हैं? So the other 3 previous nations which have already done space docking are USA, Russia and China, US, Russia and Japan, US, ESA. ESA means European Space Agency. Space Agency and Russia, then US, China and Pakistan. What is the answer? So these are the 4 options. Yes, Sirinta Banerjee, you're right. The right answer is option A, US, Russia and China. So actually these 3 nations are actually have done successfully done space docking. So this you should be knowing.
ठीक है, A is the right answer to this question. Okay, है ना? So ISRO in the early hours of Thursday, है ना, 16 जनवरी को सक्सेसफुली डॉकिंग हुआ था, सक्सेसफुली डन SPADEx docking experiment, making India the fourth country after US, Russia and China to achieve this historic feat. ठीक है, A is the right answer to this question. याद रखिएगा, है ना, 16 जनवरी को हुआ. Okay, let's move on to the next one. When we are talking about this mission, the space docking satellites were launched from which? From dash launch vehicle. कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल कह लो या रॉकेट भी कहते हैं, हालांकि ना. What is the right answer to this question? कौन से लॉन्च व्हीकल? PSLV C57, GSLV Mark 3 D2, PSLV C60, SSLV C42. अच्छा, please tell me the full form of SSLV, PSLV and GSLV because this was asked in ALET exam. एक बार पूछा है अभी 1-2 साल पहले. Yes, Serenita Banerjee has said C. Yes, right. PSLV C60 से लॉन्च किया गया था ये सैटेलाइट. Please tell me the full form of SSLV, PSLV and GSLV. ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे, so it is the article, the Hindu article talks about it, है ना. So the two SDX-01 chaser and SDX-02 target, actually these are the two satellites sent through PSLV C60 on 30th December 2024. So 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, है ना, with the help of from the ISRO लिखा ना, ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का भी हेल्प था एंड ऑल. ठीक है, सो अब देखो होता क्या है, मतलब टेलीमेट्री ट्रैकिंग की हेल्प से एक्चुअली ये डॉकिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुआ. ISRO इसको कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ISRO. ओके, सो दिस वाज लॉन्च ऑन 30th दिसंबर. तो ये अगर आप देखोगे, दिस इज PSLV C60, PSLV C60 launched on 30th December 2024. From where? What is the location? तो नीचे लिखा हुआ है ना, लिखा ना, SDSC SHAR श्रीहरिकोटा लिखा है. You can see it. So these are the images. तो SDSC मतलब, what is the meaning of that? Please tell me. Satish Dhawan Space Center. Satish Dhawan Space Center. SHAR मतलब श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, इस तरह लिखते हैं. श्रीहरिकोटा ये हो गया हाई एल्टीट्यूड, एस लिख दे, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज करके होता है. ठीक है, तो यहां से दिस इज द प्लेस वेयर एक्चुअली दिस PSLV C60 रॉकेट इज लॉन्च. ठीक है, ओके, नाउ सो ये 30th December 2024 का इट वाज लॉन्च. एंड देखो इसको जो है ना, जो PSLV C60 लॉन्च हुआ, दिस इज वन ऑफ द वर्जन ऑफ पोएम 4 है ये, PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसको पोएम कहते हैं. इट रेफर्स टू द यूजेज ऑफ द स्पेंट 4th स्टेज PSLV सैटेलाइट. ठीक है, तो इसको पोएम भी कहते हैं. सो पोएम 4 वाज एक्चुअली, ऐसे याद रखना, PSLV C60 which launched a SPADEx mission was also पोएम 4. ठीक है, सो पोएम मतलब PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल. सो दिस आल्सो यू शुड रिमेंबर बिकॉज़ कभी-कभी ये सब पूछते हैं एग्जाम में, एंड दिस यू शुड बी नोइंग. अब एक चीज आपको बताना है, फुल फॉर्म पूछना है. सो SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. प्लीज रिमेंबर इट. इसमें छोटे हल्के सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं 500 kg तक. देन वी हैव PSLV which means पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड उससे सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो GSLV होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, जिसका GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, जो Mark 3 होता है, दिस इज द मोस्ट हेवीएस्ट, मोस्ट पावरफुल वन, GSLV Mark 3. ठीक है, और इसी को LVM3 भी कहते हैं, लॉन्च व्हीकल Mark 3, which was used in Chandrayaan 3, Chandrayaan 2, and it will be used in future in Gaganyaan mission also. ठीक है, so these are the basic things about launch vehicle rockets of ISRO. ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया, we are done with this. Let's move on further with the concept of docking. अब हम लोग को समझना है कि डॉकिंग होता क्या है. So originally the word docking is specifically used in context of ship. I'll discuss what is space docking, जो आज की क्लास में मेन कॉन्सेप्ट समझने का है, and why it is helpful. But before that we have to understand the concept of docking originally came from ship. ठीक है, तो जैसे अगर आपने सुना होगा, देखो अगर आप देखोगे, if you see it carefully, this is a ship, और ये शिप जो है वो डॉक करने जा रही है. ठीक है, so docking means it is going
actually it is going to actually touch the port and the people will then come out. ठीक है, मतलब डॉकिंग का मतलब होता है शिप आकर के अपने स्टैंड में लग जाए ताकि लोग उतर जाए उससे. दैट इज द आइडिया. सो अगर आप गौर से देखोगे तो शिप आ रही है दूर से, है ना, और दिस शिप इज एक्चुअली गोइंग टू गेटिंग डॉक्ड, है ना. इसीलिए जहां पर शिप का स्टैंड होता है उसको डॉकयार्ड कहते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, डॉकयार्ड. So if you get a chance to visit, for example, if you get a chance to visit Mumbai, so you will find dockyard there. ठीक है, तो बोलते हैं ना मुंबई डॉकयार्ड और कोलकाता डॉकयार्ड, है ना, the place where actually ships get docked, है ना. Similarly, when we have discussed in the past, we have I'm sure you must have heard it कि Indus Valley civilization में एक डॉकयार्ड होता था, है ना. That dockyard is Lothal, है ना. This is Lothal. This is actually we have found dockyard. तो यहाँ पे क्या होता है, जो शिप आती थी यहाँ पर आके लगती थी, सो इट वाज कंसीडर्ड एज अ स्टैंड ऑफ शिप. दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज डॉकयार्ड. ठीक है, लेकिन ये तो हो गया डॉक, नॉर्मल कॉन्सेप्ट डॉकिंग का, कि जहां पर शिप का स्टैंड हो, जहां पर आके लगती हो. तो डॉकिंग क्या होना चाहिए, बहुत स्मूथली होना चाहिए, है ना. ये स्मूथली यहाँ पर आके यहाँ तक अटैच हो जाए, है ना. सो सिमिलरली स्पेस डॉकिंग मतलब क्या होता है कि दो सैटेलाइट, एक मान लीजिए टारगेट है, एक रुका हुआ है, और दूसरा सैटेलाइट आए यहां से आकर के स्मूथली आके इस पे अटैच हो जाए. जैसे शिप में हमने देखा है ना, एक शिप है तो ये पे पोर्ट है मान लो, और ये शिप आ रही है, छोटी सी शिप है, मतलब बड़ी सी शिप है, तो ये आ रही है यहां से आकर के प्रॉपर्ली स्मूथली अटैच हो जा करके, सो दैट पीपल कैन ऑन डीबोर्ड, है ना. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉकिंग इन शिप. सो सिमिलरली स्पेस डॉकिंग का मतलब है कि अगर कोई एक ऑलरेडी टारगेट है, टारगेट सैटेलाइट है, यहाँ पे ये रुका हुआ है, इट इज स्टेबल, and the other one comes और इससे जाकर के अटैच हो जाए स्मूथली, so that इसके अंदर कोई आदमी हो तो इसके अंदर आदमी यहां से यहां चला जाए. Yes, that is the idea. Similar to the ship, कि if this satellite inside it there is a human body, so if this gets touched, this gets docked, so from here human can go to here. ठीक है, that's called as space docking. So I'll show. ठीक है, so these are the images I have taken from ISRO's YouTube channel. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये है एक सैटेलाइट और ये है एक सैटेलाइट. ठीक है, अब इसमें से एक जो है वो रुका हुआ था, मींस परहैप्स दिस वन एक्चुअली वाज एक्चुअली द टारगेट व्हिच वाज स्टैटिक, इट वाज नॉट मूविंग एंड दिस वाज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, ओके, इसका नाम भी लिखा हुआ था अगर आपने देखा होगा गौर से, इफ यू सी इट केयरफुली. सो देयर आर टू वंस, है ना. वन इज कॉल्ड द चेजर, SDX-01 चेजर, लिखा है, यानी मूव कर रहा था, एंड द अदर वन वाज SDX-02 टारगेट, यानी मूव नहीं कर रहा था, ये स्टैटिक था, स्टेशनरी था, यू कैन से. एक रुका हुआ था, दूसरा आके उसमें जाके अटैच हो गया. सो दैट इज हाउ आई विल शो. ठीक है, अगर आप देखोगे यू कैन सी इट हियर, एंड दिस इज द फर्स्ट. उसके बाद देखोगे क्लोज आ गया, बोथ आर एक्चुअली क्लोज. वन एक जो रुका होगा, एक मूव कर रहा होगा. ठीक है, एंड यस यू कैन सी इट हियर. ये भी वीडियो है, तो ये इंडिया इसी के ऊपर ऐसा हुआ. देखो ये यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है. ठीक है, सो थोड़ा देर बाद देखना, आई एम शोइंग यू सम वीडियो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. सो अगर आप देखोगे थोड़ा सा और क्लोज आ गया. ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो ये और इतना क्लोज आ गया, बस इसका गैप है, एंड लेटर ऑन दिस गॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो ये डॉकिंग कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल. अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई आदमी है, सो ह्यूमन इज इनसाइड इट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हालांकि इस मिशन में ह्यूमन नहीं था, तो ह्यूमन कैन गो क्रॉस एंड गो हियर इन दिस सैटेलाइट. ठीक है, आदमी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में चला जाएगा अगर डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाएगा. If the docking is successful, then a person who is, let's say, in satellite 1 can move to the satellite 2. ठीक है, जैसे ट्रेन में कैसे होता है, दो ट्रेन का अगर बॉगी मर्ज कर दिया था, यानी मिला दिया था, तो लोग चले जाते हैं वेस्टिब्यूल से. सो समथिंग सिमिलर टू दैट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों हुआ है, अब आप सोचोगे ना एक सारी डॉक करा दी, इसका फायदा क्या है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, this we have to understand. अब देखो, है ना, तो SPADEx के बारे में हम डिस्कस, है ना, टू मैच्योर ट्विन सैटेलाइट मिशन डेवलप बाय ISRO, है ना. अब देखो, हाँ देखो, SDX-01 एक चेजर है और एक टारगेट है, एक रुका हुआ था, एक जाकर के दूसरा अटैच हो गया. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सी दिस. दिस इज कॉल्ड एज ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट. This is a space station. You will find it in space, somewhere around 400 kilometers. देखो लिखा ना है, it is almost 8 docking से 400 kilometers from the Earth. तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है,
उसके 400 किलोमीटर दूर समवेयर है, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, वो यहाँ पर है, और ये जो है घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। सो इन वन डे एक्चुअली अगर आप देखोगे लिखा हुआ है, it circles the earth in roughly 93 minutes, completing 15.5 orbit per day. एक दिन में 15.5 बार घूम रहा है, ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ओके। तो इसमें होता क्या, यहाँ पे लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, सो पीपल गो देयर एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां जाते हैं, देयर सैटेलाइट्स गेट अटैच्ड टू इट, डॉग्ड जिसको कहते हैं स्पेस डॉग, फिर यहाँ से अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर रिसर्च करते हैं, लाइक सुनीता विलियम्स। सो करेंटली सुनीता विलियम्स इज इनसाइड दिस, सुनीता विलियम्स इसी के अंदर है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए स्पेस डॉकिंग हेल्पफुल होता है, देखो। सो सबसे पहले फर्स्ट यू शुड नो दैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अचीवमेंट ऑफ नॉट वन कंट्री बट मल्टीपल कंट्री। सो नासा यूएस की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस इज फ्रॉम रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा इज जापानीज, देन कनाडा। सो दीज एक्चुअली कंट्रीज टुगेदर हैव मेड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सक्सेसफुल। अब देखो ये स्पेस डॉकिंग, जैसे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अब देखो जैसे क्रू ड्रैगन 9 है, ये अर्थ से आया होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से अर्थ से आया होगा, यहाँ जाके अटैच हो गया। सिमिलरली अगर आप देखो ये है सिग्नस 21, ये भी अर्थ से आकर के अटैच हुआ होगा, स्पेस डॉकिंग जिसको कहते हैं। फिर ये यहाँ से आया होगा, स्पेस बार से आया होगा, जाके अटैच हो गया, ओके। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक सुनीता विलियम्स इज द सेम केस। देखो अगर पहले आप इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट, दिस विल बी न्यूज, मोस्ट लाइकली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड रिटर्न बाय फरवरी। तो ऐसा न्यूज आ रहा है कि हो सकता है फरवरी तक वापस आ जाए। सो आई हैव मेड अ वीडियो, ये सर्च करोगे यू विल गेट दिस वीडियो, ठीक है। अब देखो आपको समझना है व्हाट इज एक्चुअली इट इज, है ना। सो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बैरी वेरमोल रिटर्न, एक्स यूएस आर्मी स्पेस कमांडर, शेयर्स 3 डेंजरस सिनेरियोज एंड ऑल, ठीक है। तब देखोगे जैसे ये है ना, देखो ये स्पेस से आ रहा है, ये आ रहा है अर्थ से, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ, और ये जाकर के इसका ढक्कन खुला, आई मीन इट्स केम अप एंड इट विल गो एंड अटैच। तो जब अटैच हो जाएगा, इफ द स्पेस डॉकिंग इज सक्सेसफुल, अगर स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर आदमी बैठे हैं, सो ह्यूमन सिटिंग इनसाइड इट कैन गो इनसाइड, इसके उधर चले जा सकते हैं इनसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये जैसे मान लो क्रू ड्रैगन आया होगा, मान लो, तो क्रू ड्रैगन यहाँ से आया अर्थ से, यहाँ जगह अटैच हुआ, फिर ह्यूमंस आर इनसाइड द क्रू ड्रैगन कैन गो इनसाइड इट, इसके अंदर चले गए, यहाँ रहते हैं लोग। सो इनसाइड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ह्यूमंस लिव, ठीक है। सो करेंटली सुनीता विलियम्स इज इनसाइड इट, है ना, सुनीता विलियम्स, एंड देयर आर मोर साइंटिस्ट आल्सो, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। सो स्पेस डॉकिंग ही सक्सेसफुली कराइएगा तब ना लोग अंदर जाएंगे, एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट क्रॉस करेंगे। सो दैट इज व्हाई स्पेस डॉकिंग इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये तो हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अब जो एक्चुअली स्पेस डॉकिंग क्यों इसरो करा रही है, the reason why we are doing it, so that in future if we are making our own international space station, then it would be very helpful. तो फ्यूचर में इंडिया का प्लान है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन हो, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये तो 4-5 का मिल के, यूएस का नासा है, रॉसकॉस्मोस रशिया का है, कनाडा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन जापान, ये लोग मिल के, है ना। नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन के लिए डॉकिंग सक्सेसफुल होगा तभी तो, once the space docking is successful, then only it is possible. So PM Modi has said that India will have its own space station by which year? 2040, 2035, 2050, 2060. What is the target? क्या टारगेट है? What is the right answer? The right answer is B. 2035 is the right answer to this question. India to have its own space station by 2035. Country will go to the moon again, says Prime Minister Modi. है ना? तो है ना? ठीक है, तो इंडिया का 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा, दैट इज आवर प्लान, है ना। और उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। सो फाइनल वर्जन विल बी देयर इन 2035। अब देखो होता क्या, एक चीज और समझ लो, जैसे ये स्पेस स्टेशन है, तो ये जो स्पेस स्टेशन ही भेजा गया होगा, तो एक पूरा एक बार में तो भेजा नहीं गया होगा, दिस वाज नॉट शॉट वंस, सेंट वंस, है ना। मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो कुछ हिस्सा पहले भेजा गया होगा, फिर दूसरा हिस्सा भेजा गया होगा, है ना। सो इन फ्यू पार्ट्स आल्सो दिस वाज सेंट फ्रॉम अर्थ, एक बार में इतना बड़ा चीज नहीं भेजा गया था, एंड दे ऑल गॉट स्पेस डॉक्ड टू मेक द एंटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो पार्ट्स में भेजा गया, सब जाके अटैच हो गया, स्पेस डॉकिंग हुआ, तब जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। दैट इज व्हाई स्पेस डॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
जैसे ये है इंडिया का मॉडल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का. दिस इज द मॉडल that the ISRO has planned to send. ठीक है, by 2035 this is a target to be completed. ठीक है, okay. Okay, similarly, like we have our plan, and China is also coming up with its own space station. What is its name? In fact, it has already sent some of the missions regarding it. उसका नाम क्या है? China is coming up with its own space station called as what? Can anyone tell me? I'm waiting for the response. Tiangong, है ना, space station. So you can see Tiangong space station. This is the China's target to make the space station. And if you see it carefully, so they have already sent April में Tianhe, they have sent July 2022, April 2021, then July 2022 में Vientiane, then October 2022 Mengxian. So one is left. Otherwise they have sent already 3 parts. तो 3 हिस्सा भेज दिया. मतलब वही होता है, चारों हिस्सा है ना, जैसे मान लो एक हिस्सा भेजा होगा, दूसरा भेजा होगा, तीसरा भेजा होगा, चौथा, like this. So actually all these 4 will get space docked. Okay, space docking होता है. Then only after that this is formed, है ना. And एक बार में पूरा नहीं भेजा सकता है ना. At one go you cannot send the entire space station from Earth. So you will send some parts, then after some parts, then after some parts, and then it will actually over a period of time it gets space docked, and it is actually the entire space station is made. इसीलिए concept important है. That is why this concept is very very important. Okay, so you can see a Chinese space station जो Tiangong space station, उसके different parts हैं. Okay, so 1 2 3 4 5 ऐसे देख लेना. अब different parts को फिर attach करके means देखो ये सब जाके attach होगा, ये से attach होगा, ये से attach होगा, ये से. All these are actually space docking that would be done in the space. ठीक है. So I hope it is clear. है ना. This is about Tiangong space station. You can read about it. Similarly, रशिया का भी एक पास्ट में एक स्पेस स्टेशन हुआ करता था from 1996 to 2001, मीर नाम से. ठीक है, was a space station operated in low Earth orbit by the Soviet Union and later by Russia. मतलब 1991 के बाद Soviet Union became Russia. So that is what you should be knowing. हाँ, उसके बाद मीर जो है खराब हो गया, मीर डीके हो गया, तो उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ गया. बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ऑफ not one country, but it is a contribution of different, है ना. NASA, US की, Canada, Japan, European Space Agency, Russia मिल करके. हाँ, so Mir was the first continuously inhabited long-term research station in orbit. That is what also you should be knowing. है ना. And we have seen this type of reports also. This is 2 साल पहले आया था कि Russia has decided to come out from international space station because international space station में there are other countries also, है ना. US, Canada, Japan, है ना. European Space Agency. So Russia was also a part of it. Now they have decided that most likely they will come out or they will withdraw. So and it will make its own space station by 2030 again. That is what this was in the news and all. Okay. So this is all about today's class. Let me give you some homework. And once the class is over, you have to write it in the comments. नीचे comment में answer करना है class over होने के बाद. This is A1, A2 and A3. So A1 में है name the country where recently two Supreme Court judges were assassinated. The next is name the 2 judges. उस country का नाम बताना है और उस judges का नाम बताना है. And the third question is Iran is planning to build a new capital city in which moving towards a new city as the capital. What is its name? So ये 3 question है. After the class is over, please write in the comments. एक ही comment में लिखिएगा A1 का आंसर, A2 का आंसर और A3 का आंसर in one comment. So this is all about today's class. Please press the like button, subscribe to the channel. Thanks for watching. Have a nice day.